Hello, everyone. Good evening to all. Welcome to the 5 days live course on GST. This is CA Sachin Jain from Jodhpur. And today we are going to start this unique course, this unique series of 5 days on complete GST law. So, before starting this session, before starting our discussion, I just want to confirm that my voice is audible and the presentation is visible to you so that we can start the session in a perfect way. So, just comment in the chat box that my voice is audible and the presentation is visible to all of you. Hello. I am waiting for your reply in the chat box that my voice is audible.
Sir, I am not getting any reply in the chat box, so please once confirm me that my voice is audible to you so that we can start our discussion. And as per my thought, voice is okay and presentation is also okay. Just once confirm me in the chat box. Okay, sir, I got the reply from certain persons, and now we are going to start the session. इवनिंग का टाइम है एंड we have just 5 days to complete the GST law. We are going to discuss on each and every topic of GST law from a very deep analysis point of view. Okay, sir. I know you all are knowledgeable person. जिनके सामने मैं आज हूँ, maximum people are from department and others are professionals. Okay, so this is a great opportunity for all of us to discuss various things under GST. So, in these 5 days, we are going to cover around all the topics of GST. So, I just want to share certain important things with you, and then after I am going to start a session, I am going to start the content. Okay, sir. So, first, one request is that made this session as a interactive session. Okay. So, here is the chat box. Zoom पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, सो आई एम नॉट एबल टू कंडक्ट द सेशन ऑन जूम क्योंकि वहां पर बीच में कई बार जो है लिंक एक्सपायर हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और कई सारे टेक्निकल इश्यूज हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक द सेशंस ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म. ओके, सो it is my request to you, make this session as much as interactive. You have chat box and also the chat box is open in front of me. Okay, so if you have any question, if you have any doubt, if you have any suggestion, you can comment me in the chat box so that I can take the question at the same time. Okay, we are not going to wait for the last moment or for at the end of the session or at the end of the last day of our session. We are going to take the questions in between the sessions so that this session will be in an interactive mode and this session will be in a discussion. Okay, I am not a lecturer and you are not a student. Okay, so this is the fundamental. We are going to do this. Okay, I am going to use the mode of communication will be Hindi and English both. Okay, maximum part is in English and certain examples are in Hindi, so it will be okay for all of you that it is easy to understand the things. Okay, अगर आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा है, if you are not getting any point at any time, in that case you can comment in the chat box. I can provide you the example, I can give you multiple examples for that. Okay, sir. Also, we are going to cover the GST from basic till the advanced level. Okay, so it is my advice to you, अगर आपने पहले कुछ भी इससे रिलेटेड पढ़ा है, because maximum are you from departments, are you the departmental authorities, so जो प्रैक्टिकल केसेस आपके साथ में आते हैं, यू कैन शेयर विद मी. वी हैव आल्सो वन व्हाट्सएप ग्रुप इज अवेलेबल. इफ यू हैव एनी डाउट पोस्ट सेशन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक्स, you can comment in the WhatsApp group. I am going to provide the reply in WhatsApp itself, or we can discuss it in the next day. Okay, so 21, 22, 23 timing will be 8 to 10. Okay, 8 to 9:45 for 10, whatever will be the time. And for Saturday and Sunday, we are going to plan certain other time. Okay, so we'll discuss accordingly. And it is my request to you, जब आप join हो रहे हो, you need to join it for complete 5 days. Okay, don't wait for the recording. Although we will provide you the recording on the same day, but it is my request to you, don't wait for the recording क्योंकि recording तो YouTube पे already पड़ी है. मेरे YouTube channel पे आपको session की recording मिल जाएगी. So don't wait for the recording. We are going to read the subject, we are going to learn the subject, we are going to discuss the subject in live form. Okay, you have paid the amount for the live only, so it is my humble submission to you, please go with live. Okay, sir, is that okay? Now with that we are going to start our discussion. Sir, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी. मैं ये सोच करके आज ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद दिस माइंडसेट दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट जीएसटी. ओके, ऑल्दो वी यू ऑल आर मास्टर्स इन जीएसटी, बट हम ये सोच रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूं कि वी हैव नो आइडिया अबाउट जीएसटी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द जीएसटी फ्रॉम द बेसिक. ओके सर, फर्स्ट constitutional background of GST. We are going to discuss the constitutional background के GST आया से. When we know the fact that how the GST come and from where the GST come, in that case we got the idea. And
एज ए डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, एज अ प्रोफेशनल्स एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन, हम लोग को कई सारी चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, एंड फॉर दैट पर्पजेस देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द डीप नॉलेज. ओके, विद दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी. जिन लोगों ने भी कोर्स को बुक्स के साथ सब्सक्राइब किया था उन लोगों के लिए बुक्स पोस्ट कर दी गई है. सो दिस इज माय assumption that you all have already received the books. If someone has not received the books, they may comment in the WhatsApp group so that we can provide you the tracking ID. Okay. और जिन लोगों ने भी बुक्स के विदाउट इस कोर्स को सब्सक्राइब किया है, सो फॉर दोस we will share you the daily material in PDF form. Okay, we are not going to provide you the complete book, but we are going to provide you the extract of the book. We are going to provide you the basic content of the book. Okay, if you still want to buy the book, you can connect with me over WhatsApp, so we can give you the link. There is no issue with that. But yes, we are also going to provide you the material on your WhatsApp group. Okay, sir. और जिनके पास books है, well and good. Now, sir, constitutional background of जीएसटी, और जिन लोगों ने भी आज विद मटेरियल कोर्स को सब्सक्राइब किया है उन लोगों के मटेरियल आज ही पोस्ट हो चुके हैं. सो यू आर गोइंग टू रिसीव इट विद इन 3 to 4 days. Rest assured, we are going to share you the PDF. Okay, there is no issue with that. Now, sir, constitutional background of GST. So now there is article 246 is available. Sir, I am also going to read the language of law so that it will be more easy for us. It will be more convenient for us so that we can got the idea that how we are going to read the language of law. Okay, sir. Now, Article 246, bifurcation of powers, distribution of powers. So, Parliament has power to make the laws, state government has power to make the laws. इसीलिए यहाँ पर दो हैं, एक central authority है and another is our government authority, and both have power to make the laws. So, first question comes that who has formed this GST and who has the power to change the GST law, to amend the GST law time to time. So, there is one article called 246A. Sir, whenever we are going to file any appeal, whenever we are going to file any litigation in front of the departmental authority, at that time, we need to put the relevant article, the relevant section. So, at that time, हम लोग क्या करते हैं? We are going to just put the sections of GST law. First, we need to take the reference of various articles so that it will be more convenient for the departmental authority as well as for professionals to link the law. Okay, so Article 246A inserted with effect from 16th-9/2016. Okay, and in this article is going to provide the power to central government as well as to state government. इसीलिए there is two GST. One is central GST, that is CGST, and another is state GST, that is SGST. So in this article, concurrent power to parliament and state government. Okay, sir. In these 5 days, we are not just going to discuss the law. We are going to discuss on the reasoning of the law, why this provision is available in this GST law. Okay, so that it will be very much beneficial for us. We got the idea, और हमको वो चीज मेमोराइज हो जाएगी. यहाँ पर किसी तरह से हमको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. वी आर गोइंग टू मेमोराइज दोस थिंग्स इन दिस सेशन इटसेल्फ. ओके सर. सो for making laws regarding GST, this is an overriding power for Article 246 and 254. Article 246 says that state government has the power, parliament has the power, and both has the power. But Article 246A for GST specific says that state government and parliament both has the power, concurrent power to make the laws. Okay. GST shall be applicable on following things from the date of recommended by the GST Council. So, there are 5 petroleum products available on which GST will be applicable on a future date. Okay. So, that means currently there is no GST on these 5 petroleum products. We all know this is very well. Hence, we are going to say these products covered under non-taxable supply. या वी कैन से नॉन टैक्सेबल सप्लाई. ओके, बिकॉज अभी ये सारी की सारी सप्लाईज, दीज सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल. दे आर गोइंग टू टैक्सेबल ऑन द फ्यूचर डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. ओके, सो पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
high speed diesel, motor speed, natural gas, and aviation terminal fuel. These five petroleum products are there. Now, why GST will not be applicable on these five products? Sir, हम सब लोगों को पता है, we all know very well that GST is not applicable on these five petroleum products. So what is the reason कि इन पर GST नहीं है? So we are going to read the reason itself. If petrol and diesel are bought under GST, they will have to be taxed at a very higher rate. Currently, the highest rate of GST is 28%. Of course, there are surcharges and cess that can be charged by the government over and above this. It can be concluded in view of the above. It is quite impossible as of now to bring petrol and diesel under GST regime. Sir, currently on these five petroleum products, the rate of GST is around 40 to 45%. Okay. But under GST, the maximum GST rate is 28%. अगर गवर्नमेंट इस इन फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर लेकर के आती है, इन दैट केस द रेवेन्यू विल बी reduced. So basically we can say this is the reason the government is not come up with that notification that these five petroleum product is to be included under GST. Is that okay, sir? Now, Article 246A sub Article 2, exclusive power to Parliament for making the law. In that case, if someone is going to make the supply from one state to another state, in that case, Parliament has the exclusive power to make the laws. Okay. In that case, state government that is not going to make the laws. Suppose I am going to make any supply from Rajasthan to Gujarat. In that case, Rajasthan government has no power to make the law. In that case, Parliament has the power to make the laws. Okay. In case of intra-state supply, that means I am from Rajasthan and I am going to make the supply in Rajasthan itself. In that case, state government has power to make the laws. Is that okay? Now, there are certain basic things are there. Decisions of GST Council will be 75% majority in favor of decision, 33.33% of union and 66.67% of state government. Distribution of disputes अगर यहाँ पर कोई हो जाता है in between government of India and one or more state, government of India and any state and two states, in that case the resolution will be done by the GST Council. Okay, sir. Now, what is the power of this GST Council? Well, these five petroleum product is to become under the GST regime. Okay, distribution of revenue between IGST and CGST, that is state के बीच में, central के बीच में revenue का distribution कैसे होने वाला है, that will be decided by this GST Council. So, sir, अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी डिस्कस किया, these are the basic, these are the history. Just confirm me once in the chat box that history is okay. Article 246A is okay in your mind. Just I want the reply from your side in the chat box. Important definition. We are not going to take the definitions at this time. We are going to discuss on these definition with the topic itself. Okay. Next. Sir, now we are going to start a very important topic under GST. Before starting that topic, I just want one confirmation from your side that history is okay in your mind. Just comment in the chat box. Now, one more display is there. Okay. Sir, so Section 7 of CGST Act of 2017. Sir, in this CGST Act or GST regime, हम लोग ये बोलते हैं जीएसटी कब लगेगा, दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन, दैट व्हेन वी नीड टू चार्ज जीएसटी, दैट इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन. सो
if I'm talking from that point, what will be the point of taxation in case of GST? That is when we need to charge the GST. जब हम उस पॉइंट को जानेंगे तभी तो लेवी अराइज होगी, बिकॉज जीएसटी कब लगता है? किसी एक पॉइंट के अराइज होने पर, और जब वो पॉइंट अराइज होगा एट दैट टाइम वी नीड टू चार्ज जीएसटी, and after that we need to talk about the collection. So in the case of GST, when there is any supply, at that time GST should be charged. कई बार हम लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं, एट दैट टाइम द क्वेश्चन इज दैट सर इस टर्म पे जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, डिस्काउंट पे जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, इंसेंटिव पे जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन इन अवर माइंड. So for that purpose we need to decide that the point of taxation, that is supply triggered or not. That means this particular transaction is covered under supply or not. अंडर जीएसटी जैसे ही सप्लाई होगा, एट दैट टाइम हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर जीएसटी लगना चाहिए. अब बिफोर फॉर डिसाइडिंग कि जीएसटी यहां पर लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए, वी नीड टू डिसाइड दैट द टर्म इज सप्लाई और नॉट. ओके, सो नाउ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. सर इन दिस 5 डेज के अंदर मैं आप लोगों को सेक्शन भी मेमोराइज करवा दूंगा, नो इश्यू विद दैट. नाउ सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सेज अबाउट सप्लाई. जब भी सप्लाई होगी तब हम लोग बात करेंगे जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू आइडेंटिफाई द सप्लाई. सो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स. सर इंक्लूड्स मींस गवर्नमेंट चाहे तो इस सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ और भी ऐड कर सकती है. अगर यहां पर यही होता सप्लाई मींस, इन दैट केस वो जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा अपने आप में लिमिटेड हो जाती. बट इन केस गवर्नमेंट ने यहाँ पर वर्ड यूज किया है सप्लाई इंक्लूड्स, दैट मींस इन फ्यूचर दे कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स इन दिस डेफिनेशन. Okay, so this is in a part of litigation. So now supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, or agreed to be disposal for a consideration by a person in the course or furtherance of business. When you are going to read these lines, in that case you found that two things are must for supply. One is in the course or furtherance of business. अगर मैंने मेरे बिजनेस में कोई भी चीज की है, in that case that should be treated as supply. Suppose I have taken my GSTN and providing that consultancy or providing these type of training sessions are part of my business. And now if I am going to provide you any type of classes, in that case हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस का पार्ट है. In that case GST should be charged. वहां पर GST लगना चाहिए. वहां पर जो है जीएसटी लगना चाहिए. लेवी का एक्चुअल मतलब क्या होगा? लेवी मतलब कब हमको जीएसटी लगाना है, व्हेन वी नीड टू चार्ज जीएसटी, दैट इज व्हाट इज द कॉल्ड एज योर लेवी. अगर मुझे टैक्स लगाना है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए. ऐसा तो है नहीं कि मेरी हर सप्लाई पे टैक्स लग जाए, मैंने मेरे घर का स्क्रैप बेचा उस पर भी जीएसटी लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा. सो फॉर दैट पर्पजेस यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया अगर ये पर्टिकुलर थिंग्स होती है, इन दैट केस आपको जीएसटी लगाना है. सो फर्स्ट पॉइंट, if you are going to do any act in the course or furtherance of your business, and second condition is that for a consideration. So we can say अगर मुझे किसी को भी किसी भी ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगाना है, इन दैट केस फर्स्ट मैंडेटरी कंडीशन इज दैट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस or furtherance of business or for a consideration. So these two mandatory conditions are there. First is in the course of furtherance of business, second is for a consideration. Now sir अब इसके लिए क्या हो? So if I am going to make any sale, another, if I am going to transferring any particular assets or any product, suppose my registered office in Rajasthan and my branch office is in Gujarat. If I am going to sell, if I am going to transfer any product from my Rajasthan office to my Gujarat office, in that case this is called as transfer and GST should be levied, because I am doing the same in the course or furtherance of my business, or I am doing that transfer for a consideration.
सो इस तरह से हम लोगों को प्रैक्टिकल सिनेरियोज डिसाइड करने पड़ेंगे इफ यू वांट दैट आपका जो फंडामेंटल्स है या फिर बेसिक्स है वो मोर एम्फेसिस के साथ क्लियर हो जाए। आप मल्टीपल एग्जांपल्स ले, उस पर जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इन दैट केस इट विल बी मोर इजी, मोर कन्वीनियंट फॉर यू। एंड मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम डिपार्टमेंट, सो आपके पास में तो मल्टीपल केस आते हैं। जब भी आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनालिसिस ऑफ एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दैट केस यू नीड टू चेक डिस्काउंट, उस पे जीएसटी लगना चाहिए, दैट इज टर्म्ड एज दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई और नॉट, कोई इंसेंटिव है, कोई कमीशन है। ओके, सो ये सारी की सारी चीजें हम लोग एग्जांपल्स के साथ एनालिसिस करेंगे। ऑल्दो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर मल्टीपल एग्जांपल्स, तो हमारे दिमाग में वो चीजें क्लियर हो जाएगी। बार्टर है, एक्सचेंज है, लाइसेंस किसी चीज का दिया है, सपोज माइनिंग के जो लाइसेंसेस मिलते हैं, these licenses are provided for a business, और उससे जो माइनिंग होगा उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू यहाँ पर अर्न होती है। इन दैट केस दैट लाइसेंस शुड बी कंसीडर्ड एज योर सप्लाई एंड जीएसटी शुड बी लेवाइड। ओके, आज के सेशन में हम केवल ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जीएसटी लगना चाहिए, यहाँ पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, रेट क्या होगा, टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा, ऑल दीज पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशंस। ओके, सो now, the activities and transactions. So first point is clear. If I am going to make any sale, transfer, barter, exchange, license, rental in the course or furtherance of business or a consideration, in that case, the same should be treated as my supply and GST should be charged. Now, next point. The activities or transactions by a person other than an individual to its members or vice versa for a case deferred payments or other valuable consideration. That means if any club, if any association, if any organization is going to provide any services for their members, or if such type of organizations are going to provide services to their members, in that case those services should be considered as supply and GST should be charged accordingly. What will be the rate of supply, time of supply, place of supply, we are going to discuss in our next session. Is that okay, sir? जब भी कोई क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, द सेम शुड बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। नेक्स्ट, import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of businesses. That means, sir, if I am going, sir, how to decide value of supply? So, sir, please wait in our tomorrow session or day after next session. We are going to discuss on the valuation under GST section 15. We are going to read on that. In that session, we are just going to discuss that particular transaction is considered as supply or not. So that whenever you will come with any departmental audit or whenever you are going to check any financials, 3CD report or balance sheet, at that time you got the idea that the particular transaction is to be treated as supply or not. After that, we are going to decide that how we are going to calculate the value, how we are going to calculate the time, place, rate, all things we are going to discuss. So, if I am going to make import of any services for a consideration, suppose one of my जो बिजनेस एंटिटी है इज इन आउटसाइड इंडिया, और अगर वहां से मैं कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू इंपोर्ट एनी सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस अगर मैं उस कंसिडरेशन के बदले में भी कंसिडरेशन दे रहा हूँ, उन सर्विसेज के बदले में भी कंसिडरेशन दे रहा हूँ, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं है, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई। बिकॉज गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इंडिया में कोई ज्ञान की कमी है क्या? If you are going to take any import of services from outside India, in that case the same should be treated as supply and you need to pay the GST under reverse charge mechanism. Okay, now sir, यहाँ पर 3 शेड्यूल है जीएसटी सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट में, there are 3 schedules are available. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3. As per Schedule 1, in that particular schedule, जो भी activities, जो भी transactions, all the activities and transactions which are mentioned in Schedule 1, if
the same activities or transactions are in the course of furtherance of business but not for a consideration. That means जो भी एक्टिविटीज जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल वन के अंदर क्लासिफाई है, अगर वो एक्टिविटीज या फिर ट्रांजेक्शन होते हैं और सामने वाली काउंटर पार्टी सेइंग दैट देयर इज नो कंसीडरेशन, यहाँ कोई कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई की डेफिनेशन में ट्रीट किया जाएगा. दैट मींस if you are going to analyze any financial statement or you got any item, okay, and which is covered under schedule 1 of CGST act, we are going to discuss on that. If you get any supply or activity which is covered under schedule 1, in that case if counterparty says that sir this is not for consideration so no GST, in that case you need to argue that this activity is covered under schedule 1 of CGST act, hence चाहे यहाँ पर consideration है या फिर नहीं है, we are going to decide the consideration as per rule number 27, 28, 29, 30, 31 of CGST rules, and we are going to charge GST accordingly. ओके सर, सो शेड्यूल वन की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज जो भी ट्रांजेक्शन्स मेंशन्ड है, चाहे यहाँ पर कंसीडरेशन हो या फिर नहीं हो, फिर भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा एंड जीएसटी शुड बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली. सेकंड, शेड्यूल टू के अंदर जो भी एक्टिविटीज और जो भी ट्रांजेक्शन्स स्पेसिफाइड है, ऑल दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू will decide that that particular activity or transaction should be considered as your supply of goods or supply of services. Okay, that will be decided by schedule 2, and all those transactions and activities which is mentioned in schedule 3, that will be treated as neither supply of goods nor supply of services. That means जो भी एक्टिविटीज जो भी ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 के अंदर लिखे हुए हैं उन पर जीएसटी का कोई क्वेश्चन रेज होता ही नहीं. So 1, 2 and 3 तीनों शेड्यूल we are going to discuss one by one. Also सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 बात करता है कि गवर्नमेंट हैज द पावर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. अगर गवर्नमेंट ने ये बोला दैट द पर्टिकुलर सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, और द पर्टिकुलर सप्लाई इज सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट अ सप्लाई ऑफ गुड्स, इन दैट केस उनका डिसीजन फाइनल होगा, हमको उनकी बात माननी पड़ेगी. सो सर, most important section we can say this is the base of GST, this is the base of litigation, that the particular transaction particular activity is treated as supply or not. So we had discussed the section 7. in that particular section हम लोगों ने ये बोला कि अगर कोई सेल ट्रांसफर एक्सचेंज बार्टर लीज रेंटल in the course furtherance of business होता है, for a consideration होता है, in that case the same should be treated as supply. फिर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है इन फॉर अ कंसिडरेशन है बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, दैट मींस अगर मैं कोई सर्विस इंपोर्ट करता हूं जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, फिर भी उसको सप्लाई की डेफिनेशन में माना जाएगा. उसके बाद में हम लोगों ने बोला कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज ऑल दोस एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मेंशन्ड इन शेड्यूल 1, वो अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है बट कोई कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी उसका फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे कंसिडरेशन डिसाइड होगा एंड जीएसटी शुड बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली. देन आफ्टर वी हैव डिस्कस्ड दैट शेड्यूल 2 will tell us about that particular activity or transaction is to be considered as value, that is supply of service or supply of goods. And then after schedule 3 talks about that all those transactions or activities which is mentioned in this particular schedule is to be treated as neither supply of goods nor supply of services. So sir, section 7 of CGST act is okay for you? Just confirm me in the chat box that section 7 of CGST act is okay. Sir, we are going to start our discussion on schedule 1. That means in this particular schedule, all those transactions or activities which is mentioned in this schedule
अगर वहां पर कंसिडरेशन नहीं है, इन दैट केस कंसिडरेशन शुड बी डिसाइडेड as per the valuation rules, but those activities or transactions should be treated as value supply. Okay, and we need to decide the value as per the valuation rule. Before starting this schedule 1, I just want confirmation from all of you in the chat box that the section 7 of CGST Act is okay. सर आप लोग तो चैट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सेमिनार हॉल के अंदर बैठ करके सेशन ले रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी कैमरे के सामने बैठा, आई एम गोइंग टू मेक द लेक्चर, आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द speech. So I don't want to feel like that. I just want to feel that I am in a hall and I am going to deliberate certain important things to a very good that is participants. So this is a request from my side that whenever I'm going to say that, sir, please provide a confirmation in the chat box. So whatever will be your comments, you just need to put the same in the WhatsApp group, in the chat box. So first activity or first transaction जिसको जिस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, इन दैट केस वी नीड टू टेक द सेम एज अ सप्लाई. सो permanent transfer or disposal of business assets where input tax credit has been waived on such transfer. Sir, if someone is going to close his business, okay, if someone is going to close his business, in that case, जब वो अपना बिजनेस यहाँ पे क्लोज करने जा रहा है, एट दैट टाइम इफ ही इज गोइंग टू ट्रांसफर हिज बिजनेस, और अगर वो उसके बिजनेस का डिस्पोजल कर रहा है, इन दैट केस अगर वो ऐसा बोलता है कि साहब मेरी ये बिजनेस की असेट्स है, वो मैंने बिना किसी वैल्यू के यहाँ पर ट्रांसफर की है. सपोज कई बार जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे होते हैं या फिर बैलेंस शीट देख रहे होते हैं, जब हम लोग बैलेंस शीट देख रहे होते हैं तो हमको एक टर्म वहां पर मिलती है, सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, सेल ऑफ एनी बिजनेस. ओके, इन दैट केस हमको ये देखना है कि उसके ऊपर कोई कंसिडरेशन मिला हो या फिर नहीं मिला हो, फिर भी फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे उसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए. जीएसटी शुड बी चार्ज्ड ऑन दैट. सो वी नीड टू चेक द सेम एज अ प्रोफेशनल at the time of filing GST at 9 or 9C, or at the time of doing the income tax audit, we need to check these things. Okay, or as a departmental authority at the time of business audit, at the time of litigation, you need to check all those things. So if there is any permanent transfer of business or if there is any disposal of business assets, in that case GST should be charged whenever input tax credit has been claimed. सपोज मेरे पास में कोई बिजनेस एसेट्स है और उसे मैं सेल कर रहा हूँ, और एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट बिजनेस एसेट्स, उस एसेट्स पे मैंने आईटीसी को क्लेम किया था. सो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ दैट बिजनेस एसेट्स आई नीड टू पे द जीएसटी ऑन दैट. दैट इज व्हाट इज द लॉजिक. कंप्लीट जीएसटी लॉ के अंदर अगर आप एक फैक्ट अगर आपको समझ आ जाए कि जहां पर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने क्लेम किया है वहां पर मुझे आउटपुट पे करना है, और जहां पर मैंने इनपुट क्लेम नहीं किया है वहां पर मुझे आउटपुट टैक्स पे नहीं करना है. दैट इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्लीट जीएसटी लॉ. इनपुट और आउटपुट का तो मैं आपको ये कैसे ना. सर, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न व्हेन there are certain exception to this activity. If someone is going to make sale of their business as a going concern to someone else, in that case अपने को ये पता है कि अगर वो किसी और को बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न बेच रहा है, इन दैट केस गवर्नमेंट की रेवेन्यू यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है. सो दैट इसे यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया. ओके, कोई भी पॉइंट कोई भी लाइन अगर मैं सेशन के अंदर बोल रहा हूँ, in that case I am also going to provide the reason for that line. Okay, और कहीं अगर मैं नहीं बोलूं, in that case this is your responsibility. You should comment in the chat box that sir what is the reason behind this provision, so that आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा. So when someone is going to transfer the complete business as a going concern, in that case there is no GST, because government know that जो भी इस बिजनेस को आगे चलाएगा he will going to pay the GST. So in that case revenue will be continuing. Next, transfer of business assets as whole independent part is not subject to GST. As a whole,
जब सपोज यहाँ पर कोई दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वन इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अनदर इज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, और if that business organization is going to sell that manufacturing unit completely, complete business sell नहीं कर रहा है, he is going to sell the manufacturing unit only, in that case वो एक यूनिट होल बेसिस पे सेल कर रहा है, in that case there is no GST, because उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कोई और चलाने वाला है, so in that case the revenue of government is also continue, so there is no GST in that case. Now if someone is going to make a transfer of business on the basis of slum sale, in that case also there is no GST, and the same decision is pronounced by Innovative Textiles Limited Double AR Authority, Uttarakhand. Sir, in these 5 days, we are also going to discuss on multiple case laws. Okay, उनका reference जैसे ही यहाँ पर आएगा, I am going to discuss the same with you, so that whenever you are getting any notices or whenever you are going to provide any notices, at that time you can check the things. Okay, so कंक्लूसिवली वी कैन से, अगर कोई अपना कंप्लीट बिजनेस ट्रांसफर करता है या फिर डिस्पोजल ऑफ असेट्स करता है, इन दैट केस जीएसटी शुड बी चार्ज, बट इफ द बिजनेस इज गोइंग टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस, देयर इज नो जीएसटी. इफ द बिजनेस इज गोइंग टू सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्लम सेल, इन दैट केस देयर इज नो जीएसटी. और if any part of business is going to sell, that is any unit of business is going to sell, in that case also there is no GST. So we can say three exceptions are there. These are the exceptions. In all other cases, if there is no consideration, in that case, consideration should be decided as per the valuation rules. Now, second activity or transaction, in that case, if there is no consideration, in that case also the same should be considered as your supply. Supply of goods or services or both between related person or between distinct person as specified in section 25 when made in the course or furtherance of business, in that case the same should be treated as your supply. Sir, what do you mean by that related person or distinct person? So as per section 25 of CGST Act, in case of distinct person, in that case PAN number is same, GST number is different, in that case that those entities should be called as your distinct person. Suppose मेरा एक ऑफिस है राजस्थान के अंदर एंड आई हैव माय जीएसटी नंबर, मेरा दूसरा ऑफिस है गुजरात के अंदर, गुजरात में भी जीएसटी नंबर है, पैन नंबर सेम है, पैन नंबर मेरा ही है जिस पर दोनों बिजनेस चल रहे हैं, बट जीएसटी एन आर डिफरेंट. इन दैट केस अगर मेरा राजस्थान ऑफिस गुजरात ऑफिस को कोई गुड्स ट्रांसफर करता है और मैं ये बोलता हूं कि मैंने इस गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है, तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ये बोलेगी, यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एज पर शेड्यूल 1 ऑफ द जीएसटी एक्ट, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में ट्रांसफर होता है और वहां पर अगर कोई कंसिडरेशन नहीं है, इन दैट केस the same should be treated as supply and consideration is to be decided as per the valuation rule and GST should be charged accordingly. That is what is the definition which is given under schedule 1A point number 2. Now, provided that gift not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by employer to an employee shall not be treated as supply of goods or services. That means अगर 20,000 तक का कोई 50,000 तक का कोई गिफ्ट कोई एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को देता है, इन दैट केस देयर इज नो जीएसटी. वो रिलेटिव की डेफिनेशन में भी कवर हो जाएगा एंड देयर इज नो जीएसटी. बट इफ एनी एम्प्लॉयर इज गोइंग टू make supply of any product or any services more than 50,000 in a financial year as a gift, in that case on that particular supply GST should be charged. Now, distinct person means same pen but different GST. Examples are there. Anil Agrotech and Syam Agrotech, two from different GSTN but under same pen. Next, head office supply to branch and division treated as distinct persons. Suppose head office is in Kolkata and branch office is in Rajasthan. In that case, if head office is going to make any supply to the branch offices, in that case, the same should be treated as the supply between the distinct person. So GST should be charged accordingly and the same should be treated as supply. Head office of bank. Suppose the head office of Punjab National Bank is in
जयपुर, और अगर वो हेड ऑफिस अदर ब्रांचेस के अंदर कोई सर्विसेज या फिर गुड्स प्रोवाइड करवाता है, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज योर distinct person and the same should be covered under the supply and valuation should be decided as per the valuation rules. Now, employees of corporate office supplies services to other units of corporate treated as distinct person. However, if employees directly supply services to its corporate office, then no taxability. Sir, suppose my corporate office is in Kolkata और वो corporate office के employee राजस्थान के ऑफिस को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट पर्सन एंड जीएसटी शुड बी चार्ज अकॉर्डिंगली. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. कॉर्पोरेट ऑफिस इज इन कोलकाता, अदर ऑफिसेज सपोज इन राजस्थान, और कोलकाता ऑफिस के कोई एम्प्लॉइज अगर कोई सर्विस राजस्थान ऑफिस को प्रोवाइड करवाते हैं, जीएसटी चार्ज होगा. बट सपोज कोलकाता ऑफिस के एम्प्लॉइज कोलकाता ऑफिस को ही कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन दैट केस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज in the capacity of employer and employee relationship. In that case there is no GST because the same is covered under schedule 3 of CGST Act. You got my point? Now sir, most important चीजें हैं, whenever you are going to analyze the things, whenever you are going to analyze the financial statement, whenever at the time of litigation, these are the very silly parts, but we need to check it very carefully so that we got the idea. Siam Limited, entity registered in India, supplies services to its other entity registered in foreign. Cyril Limited is exempt if any entity which is registered under India and another entity outside India. In that case, if Indian entity is going to provide any services to the outside Indian entity, in that case there is no GST because the same should be treated as export of services. Okay, sir. So here the provision of export apply, hence not tax. जब मैं बोल रहा हूं कि नहीं टैक्सेबल होगा या फिर टैक्सेबल होगा, if you have any doubt regarding that particular point, you are free to raise the question in the chat box that sir, why you are saying that this is taxable or this is not taxable. So Taco Holding GmbH, a foreign-based company, has a branch office in India, but that branch office does not provide directly or indirectly any consultancy or services in India. Received only salary and reimbursement expenses from its head office, hence not liable for registration under GST. Sir, in that case, suppose any foreign entity is there, or if that foreign entity, अगर वो foreign entity यहाँ पर कोई ब्रांच ऑफिस ओपन करता है राजस्थान के अंदर, इन दैट केस सपोज उस राजस्थान ऑफिस से केवल यहाँ पर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सैलरी एंड रिम्बर्समेंट के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इफ दैट ब्रांच ऑफिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन राजस्थान itself, that branch office is not going to make any, in that case there is no requirement to take GST for that branch office. Sir, example is clear. One entity is there in foreign, okay, अगर ब्रांच ऑफिस का राजस्थान इंडिया के अंदर है, इन दैट केस इफ ब्रांच ऑफिस इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सप्लाई, if branch office is not going to make any supply in India, in that case there is no requirement to take GST for that branch office. Okay, I am going to take the practical examples also so that you can easily identify the same at the time of your real case. Okay, now Indigo Airlines Delhi transfer aircraft engines, parts and accessories to its branch office in Rajasthan will subject to GST. This is clear. अभी हम लोगों ने बात की, in case there is different GSTN but same pen, that is distinct person, or in case of Indigo Airlines, Delhi is the head office
And from that Delhi, there is also GST. In Rajasthan is also GST. If the Delhi office is going to make any supply aircraft accessories to Rajasthan, in that case, the same should be treated as supply between distinct person and GST should be charged accordingly. Supply to related person, GST shall be charged, although no consideration. If there is no consideration, in that case, also GST should be charged. Free sample. If कई बार when we are going to check the financial statement, we found one term in the financial statement, free gift to employees, free gift to others. In that case, we need to check that GST has been paid on that free gift. Because in case of free supply, in case of free gift, GST should be charged. ओके सपोज अगर उस एंटिटी ने वहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम ही नहीं की थी उन फ्री गुड्स के ऊपर, फ्री गिफ्ट्स के ऊपर, in that case there is no requirement of GST. But if that entity has already claimed the input tax credit on that free gift, in that case at the time of supply of those free gifts, GST should be charged. That is what is the concept in case of free sample or free gift. Fringe benefit to employee. Fringe benefit is only due to employer and employee relationship. अगर उनका एम्प्लॉय नहीं होता तो क्या वो फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते? नो. So fringe benefit is just due to that employer and employee relationship, hence the same should be treated as employer employee relationship, hence no GST should be charged. Sir, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वहां पर क्या मान लेंगे हम लोग, उसको सप्लाई मान लेंगे. फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया बिजनेस ट्रांसफर. ओके, वहां पर कुछ एक्सेप्शन हमने डिस्कस किया. जब वो गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफर कर रहा है, नो जीएसटी. जब वो एज ए स्लम सेल ट्रांसफर कर रहा है, नो जीएसटी. जब वो कोई एक इंडिपेंडेंट पार्ट सेल कर देगा एट दैट टाइम, ऑल्सो नो जीएसटी. देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया second part, that is related to transfer between related and distinct person. Okay, and we will take multiple examples related to that distinct person and related person. If you have any point, if you have any doubt regarding the schedule 1, point number 1 and point number 2, in that case you are free to raise the same in the chat box. Now supply of goods by a principal to his agent, where agent undertakes to supply such goods on behalf of the principal by an agent to his principal, where the agent undertakes to receive such goods on behalf of the principal. Sir, that means when any principal is going to make any supply to their agent, and if agent is going to make any supply to the principal, in that case the same should be treated as supply and GST should be charged accordingly. Suppose मेरा कोई जो ऑफिस है वो गोडाउन है, वो राजस्थान के अंदर है, और उस गोडाउन से मैं यहाँ पर गुड्स को सेल करने के लिए मैंने कई सारे एजेंट रखे हुए हैं. मेरा कोई एजेंट महाराष्ट्र में भी है, आई हैव एजेंट इन कोलकाता, आई हैव एजेंट इन मध्य प्रदेश, आई हैव एजेंट इन उत्तर प्रदेश, ऑल दैट. ओके, एंड आई एम गोइंग टू मेक supply from my principal place to my agent is in Gujarat. In that case, the same should be treated as supply and GST should be charged. कई बार जब हम लोग इंटर ट्रांसफर फॉर्म्स के अकाउंट्स चेक करते हैं या फिर व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द financial of such type of entities, in that case there is a go down in Rajasthan and there is a that is a stock at another place and the seller is at another place and there are multiple agents are there. How you got that idea? When you are going to check the financial, you got one point, that is commission. You need to check that commission is on which account. If you found that commission is on account of any agent commission, Dell creator commission, C&F commission, in that case you need to be very much careful कि अगर इनके बीच में कोई transfer हुआ है, if the principal has transfer any goods to the agent, in that case whether the GST has been paid on that or not, or if the GST has already been paid, in that case we need to check that GST is paid with a correct amount or not. This is our responsibility at the time of filing our GST at 9 or 9C return, or as a departmental authority at the time of litigation. These are the things on which we need to do multiple exercises. Okay, so conclusively we can say when any principal is going to make any supply to the agent or agent is going to make any supply to the principal,
In that case, those activities or transactions should be considered as your supply and GST should be charged accordingly. Now, sir, here is certain important part is there, that is C&F agents and commission agent. What is the difference between the C&F agent and commission agent? C&F agent means carrying and forwarding agent. Suppose if I am an agent and if I am going to hold stock on behalf of my principal and I am going to sold the goods on behalf of my principal, I have my own godown. मैं कोई goods मेरे principal से receive करता हूँ and I am going to hold that goods and at the time of at the right time I am going to sell the product in the market. That means I am going to carrying and forwarding agent. मैं उस goods को hold भी करता हूँ. That is called as C&F agent. Sir, C&F agent point is okay for you. And commission agents means मैं कोई बायर लेकर के आता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्स पर्सन को इतनी क्वांटिटी गुड्स चाहिए. If I am going to provide the buyer to the principal, in that case I am getting the commission for that particular transaction, and that is called as your commission agent. In case of C&F agents, in case of C&F agent, there is a mandatory requirement to taking the GST. That is GSTN is required because he is going to hold the stock on behalf of principal and he is going to sell the stock on behalf of principal. In that case, GSTN is required because जब वो गुड्स को सेल करेगा ना on behalf of principal, at that time वो उसकी सेल काउंट होगी. So GST is required. But in case of commission agent, he is not going to make any type of sales. He is just getting the commission. So in that case, there is no requirement of GST. But the GST is required at the time when the commission amount got exceed the specified limit under GST. That is 10 lakh or 20 lakh. अगर उसको commission निकल गया तब GST लेना पड़ेगा. This is the specific thing which we need to take in our mind regarding the C&F agent and the commission agent. Is that okay, sir? Then, commission agent of agricultural produce. Agriculturalist is not a taxable person and also commission agent is not a registered person due to his commission turnover. Hence, now also commission agent is not required to register under GST. If any person is going to in the business of only the selling and purchase of the agricultural produce, if anyone is the business of agricultural produce only, in that case अगर वो केवल agricultural produce की selling और buying करता है उससे उसको commission आ रहा है, in that case there is no requirement to take the GST because agricultural produce is exempt under GST, and if someone is getting the income only on behalf of that agricultural produce, in that case there is no requirement of GST. Del creditor commission. Same concept as of commission agent. Only difference is that del creditor agent is providing guarantee of the payment of principal in case recipient fails to pay the amount. Okay, sir. Now, supply of goods to an agent for further sale by auction is covered under Schedule 1 of CGSTX, hence treated as supply. That means, suppose I have a godown in Rajasthan and I am going to make supply of my particular product to my agent who is in उत्तर प्रदेश. ओके, और वहां पर भी ऑक्शन है, ऑक्शन के अंदर वो गुड्स वहां पर सेल करने वाला है. In that case, when I am going to make the supply, I am going to transfer that particular product to my agent for further sale on the basis of auction. At that time when I am transfer, that will also treated as supply and GST should be charged accordingly. Okay, sir. Now, donation or grant without any condition is not subject to GST. But if there is any condition, suppose मैं कोई डोनेशन देता हूं, इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ डोनेशन टू एनी गौशाला अमाउंट 50,000 रुपीज, और मैं उसको बोलता हूं कि मैं आपको ये जो 50,000 रुपीज डोनेशन दे रहा हूं उसके बदले में आपको उस गौशाला के बाहर में मेरा बोर्ड लगाना है, बटुक कंसल्टेंसी एंड नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड.
In that case, there is a condition for that donation. So we need to check when there is any condition involved. In that case, we need to charge GST. अब अपन लोग बोलेंगे सर एज अ प्रोफेशनल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और एज अ डिपार्टमेंटल ऑथोरिटी हाउ वी कैन चेक दैट देयर इज एनी कंडीशन और नॉट. So, sir, if there is any donation, you just need to take the receipt of that donation. And if you found anything on that donation receipt, is that okay? If you are not getting anything, you may connect to the particular person of that particular trust that, sir, there is any condition involved or not in this type of donation. And if you are getting any type of facts, in that case, you need to consider the same and you need to charge GST accordingly. So, this is a very important point. कई बार हम लोग बैलेंस शीट के अंदर डोनेशन देखते हैं और उसको हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं. कई बार हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर डोनेशन मिलता है, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, बट as a professional, as a departmental authority, this is our responsibility to check the things that this donation is on account of any condition or there is no any condition. So we need to check the same. Next, import of service by a person from a related any other establishment outside India in the course or furtherance of business. If there is any import of services, in that case GST should be charged. The same should be treated as supply. So sir, अभी तक हम लोगों ने शेड्यूल 1 डिस्कस किया और सेक्शन 7 डिस्कस किया है. सेक्शन 7 के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था सप्लाई इंक्लूड सेल एक्सचेंज बार्टर license transfer lease rental in the course or furtherance of business for a consideration. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 1. अगर यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं भी होगा, इन दैट केस कंसिडरेशन शुड बी डिसाइडेड एज पर द वैल्यूएशन रूल एंड जीएसटी शुड बी चार्ज्ड अकॉर्डिंगली. सो इन दिस शेड्यूल 1 हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा बिजनेस ट्रांसफर. इफ देयर इज एनी बिजनेस ट्रांसफर, इन दैट केस जीएसटी शुड बी चार्ज. आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा रिलेटेड पार्टी एंड डिस्टिंक्ट पर्सन. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल एंड एजेंट. एंड देन आफ्टर हम लोगों ने देखा इंपोर्ट ऑफ सर्विस. Sir, these 4 points of Schedule 1 of CGST Act and Section 7 of CGST Act subsection 1, 2 and 3 is okay for you. Just comment in the chat box so that I can take the next point. Sir, my speed is okay for you. My mode of communication is okay for you. If there is anything issue, in that case, you may comment in the chat box. अगर इंग्लिश में आपको कोई वर्डिंग समझ में नहीं आ रही है, देयर इज एनी इशू विद इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश की कोई लाइन समझ नहीं आ रही है या फिर कहीं कोई डाउट होता है, यू मे कनेक्ट विद मी ओवर कॉल. आपसे कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं. मैं उस चीज को हिंदी में भी आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा. देयर इज नो इशू विद दैट. माय टारगेट इज दैट कि इन 5 दिनों में हम यहाँ से जीएसटी के लिए कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के चले. जीएसटी बहुत डीप है, बहुत ज्यादा चेंजेस है. अगर मैं एनालिसिस कंप्लीट एनालिटिकल यहाँ पर कोर्स लूं जिसमें मुझे ईच वर्ड पे डिस्कशन करना है, इन दैट केस शायद 20 डेज भी कम पड़ जाएंगे. सो इन दीज 5 डेज हम लोग इसको बहुत अच्छे से जो चीजें हम लोग कवर कर सकते हैं वो हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं. सो रेस्ट एश्योर्ड. बस आई जस्ट वांट दैट you just confirm me that each and everything is okay for you. So मुझे ये लगेगा हाँ जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं that are useful for you and you are getting the points. जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ you are getting the points. So yes sir, import of service means if suppose I am a chartered accountant and I have my GSTN. Okay, I am into the financial consultancy services.
मुझे कोई फॉरेन की कंसल्टेंसी सर्विसेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ी मेरे बिजनेस के लिए, और अगर मैं कोई फॉरेन के आउटसाइडर पर्सन से कोई यहाँ पर सर्विस रिपोर्ट करता हूँ, इन दैट केस अगर मैं ये बोलता हूँ कि उसने मुझे वो वाली सर्विस जो है बिना कोई कंसिडरेशन के दे दी, फ्री में दे दी, फिर भी यहाँ पर जो उसकी बेसिक वैल्यू है, जो एज पर वैल्यूएशन रूल्स, रूल नंबर 27, 28, 29, 30 के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होगी, वैल्यू डिसाइड होगी, उसके ऊपर जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चार्ज हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द that is what is the last para, import of service. Next part, activities or transaction to be treated as supply of goods or supply of services. So शेड्यूल वन ने हमको बताया कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं हो वहां पर भी कुछ एक्टिविटीज है जिनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा, दैट मींस द सेम शुड बी कवर्ड अंडर सप्लाई। ओके, अभी मैं जहां पर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि जीएसटी लग जाएगा, वहां पर आज के सेशन में आपको ये समझना है कि वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज अनदर पार्ट। ओके, सो ना ना अब हम लोग जो भी शेड्यूल टू को डिस्कस करने वाले हैं, इन दैट शेड्यूल टू विल गाइड यू दैट द पर्टिकुलर एक्टिविटी or particular transaction is to be treated as your value, your supply of goods or supply of services. Now, any transfer of title in goods as a supply of goods. That means, suppose I have a land, I have a property, और अगर मैं उस प्रॉपर्टी को मिस्टर एक्स को सेल आउट करता हूँ, in that case I am going to make the agreement with the name of that Mr. X. In that case, यहाँ पर क्या हो रहा है? There is only transfer of title. और whenever there is a transfer of title, in that case, the same should be treated as your supply of goods, not as a supply of services, because यहाँ पर मैं वो land, वो particular property उसको transfer कर रहा हूँ. So this is the first point, that on account of any transfer of title, if there is any transfer of title of that goods, in that case, the same should be treated as supply of goods. Any transfer to right in that goods or undivided share in that goods without the transfer of title thereof is a supply of services. First, when I am going to, suppose I have a property and I am going to transfer the title in name of Mr. Vijay. In that case, the same should be treated as your supply of goods. But if I am not going to transfer the title, I am just going to provide my building to use to someone. In that case, I am going to provide the right to use that land. That is called as the transfer of services, supply of services. Okay, sir. So basically, whenever there is a transfer of title, the same should be treated as a supply of goods. Whenever there is a transfer of right to use any land, any building, any property, any assets, in that case, that will be treated as your transfer supply of services. Any transfer of title in goods under an agreement which stipulates that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods. Sir, suppose there is an agreement. In that particular agreement, there is a timeline of 5 years. आज वो agreement हमारे बीच में हो गया, मेरे और X के बीच में, और उस as per that agreement, after 5 years, that property will be transferred with the name of Mr. X after payment of that particular amount. In that case, यहाँ पर वो क्या माना जाएगा? Supply of goods माना जाएगा, supply of service नहीं माना जाएगा, because we had made one agreement to transfer that particular title on a future date. That will be treated as supply of goods, not as a supply of services. So these are the 3 points in case of transfer. Whenever there is a transfer of title, चाहे वो आज हो, whether it is on today or whether it is on a future date, that will be treated as transfer of title. And whenever someone is going to transfer the right to use that particular land, building, plant and machinery, in that case, that will be treated as your supply of services. Okay. Now, sir, what do you mean by this operating lease? Lease period is very short. In case of operating lease period is very short. Given for lease to one or more parties during its economic life, depreciation shall be claimed by lessor. In that case, depreciation lessee claim नहीं करेगा, depreciation lessor claim करेगा. In that case, lease term is very short. So we need to decide accordingly that the particular lease is a operating lease, is a financial lease, is a hire purchase. Okay, so that we can decide the taxability.
सो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर है ना, टाइम ऑफ सप्लाई हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो, अगर रेट सेम है तो फिर उससे हमको क्या डिफरेंस पड़ा? सर, whenever in our tomorrow session, whenever we are going to discuss on time of supply, in that case time of supply provisions are different in case of supply of services or supply of goods. So we need to be very much careful for that also. So we need to think from each and every perspective. Now, sir, financial lease. Lease period is approx whole economic life. In case of financial lease period will be approx whole economic life. Depreciation shall be claimed by lessee 100% from finance. Now, hire purchase, same concept as financial lease. Only difference is that in case of hire purchase, no deed of 100% finance. यहाँ पर कुछ कम part का भी finance हो सकता है. That means operating lease is for a short period. Suppose I am going to transfer any plant and machinery for 5 years. That is called as operating lease. If I am going to provide any property for 99 years, that is for a whole economic life. In that case, that will be treated as the financial lease. And if there is any transfer for a whole economic life but amount is not financed, in that case that is called as your hire purchase. So that is what is the basic difference in between operating lease, financial lease and hire purchase. Sir, in case of land and building, any lease, tenancy, enhancement, license to occupy land is a supply of services. If I am going to provide any license to a person, that sir, you can use that particular land for 5 years. In case of mining, for mining purposes, government is providing that particular land for 10 years, 20 years, 99 years. That means they are providing the land for a specific time period. In that case, the same should be treated as ट्रांसफर ऑफ सर्विस, नॉट एज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स, बिकॉज उन्होंने वो परमानेंटली यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया है. Any lease letting out of building including commercial, industrial, residential complex for a business and commercial purposes. That means whenever anyone going to provide the property on rent, in that case the same should be treated as supply of services, not as a supply of goods. Okay, next, treatment or process. Whenever someone going to send their product or services, product for any treatment, suppose I am a steel manufacturing unit, okay, or in that case, I need to send my steel products for testing purposes, or whenever I am going to send the testing purposes to a lab at that time, whatever will be the services provided by that lab, that is called as the supply of services, not as a supply of goods. Although for doing that activities, अगर उनको कुछ mixture करने की requirement होती है, कुछ चीजों की requirement होती है, that also will be treated as the supply of service only, not as a supply of goods. So treatment or process will be treated as supply of service. कपड़े टेक्सटाइल यूनिट के केस में अगर हम लोग बात करें, तो टेक्सटाइल यूनिट अगर कोई क्लोथ को जॉब वर्क के लिए भेजता है एट दैट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज द सप्लाई ऑफ सर्विस. ना सर, लैंड क्लियर हो गया, टाइटल क्लियर हो गया एंड जॉब वर्क एंड ट्रीटमेंट क्लियर हो गया. व्हेनेवर समवन इज गोइंग टू प्रोवाइड द ट्रीटमेंट एंड जॉब वर्क सर्विसेज, दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अवर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, where goods forming part of assets of a business are transferred or disposed of by or under the direction of person carrying on the business so as no longer to form part of this business. Such transfer or disposal is to the supply of goods. Okay, whenever someone is going to sell their business, whenever someone is going to sell any independent part of their business, that will be treated as supply of goods, not as a supply of services. This is a basic point, and I suppose this point is clear in each and every one mind. Okay, whenever there is a transfer of business or whenever there is a any independent part transfer of the business, that will be treated as the supply of goods. Now, where or by under the direction of person carrying on a business, goods held or used for the purposes of the business are put to any private use or are used or made available to any person for use for any purpose other than the purpose of business, the same should be making available of such goods is a supply of services. Sir,
अगर कोई बिजनेस के एसेट्स है और अगर उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया यूज करने के लिए, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. Okay, suppose in Batu Consultancy and Network Private Limited, I am an expert. Okay, I am a consultant. In that case, they are going to provide me the conveyance facility. They have provided me one car. ओके, इन दैट केस सपोज पहले वो कार बटू कंसल्टेंसी एंड नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड के अंदर काम आ रही थी. अब वो कार उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवा दी कि सचिन सर, यू जस्ट नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर कार फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. In that case, that will be treated as supply of services, not as a supply of goods. Because what is the logic behind this? सर मैंने आपको बोला है जब भी कोई लाइन बोलेंगे, in that case there is a logic. So what is the logic behind this? That means they are going to provide me that land, that car. They are providing me that car. They not transfer the title of that cars. उन्होंने केवल मुझे वो कार प्रोवाइड की है कि you just need to use that particular car. उन्होंने मुझे उसका कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं किया है. Hence we can say in that particular case the same should be treated as your supply of service. Where any person ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person, unless the business is transferred as a going concern, business is carried out by a personal representative. That means यहाँ पर अगर कोई बंदा अपने बिजनेस को बंद कर रहा है, if someone is going to close their business, इन दैट केस जब वो बिजनेस को बंद कर रहा है, एट दैट टाइम हम ये मानेंगे कि उसने अपने पूरे बिजनेस को सेल कर दिया या फिर वो क्लोज कर रहा है. दैट मींस परमानेंट डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स एंड दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स. बट if he is going to close his business and transferring the same to someone else as a going concern, in that case this will not happen. In that case there is no a transfer of goods. In that case that will be treated as transfer of services. Okay, so we need to decide accordingly. Agar suppose I have taken my GST registration and I am going to seize for that GST registration, in that case the same should be treated as transfer of goods. Okay sir. Now supply of services, the following shall be treated as supply of services, namely renting of immobile property. If someone is going to provide any immobile property on rent, in that case that will be treated as supply of services, because here no transfer of title deeds, hence treated as your supply of services. Construction of complex building, civil structure part thereof, including a complex building intended for a sale to a buyer wholly or partially, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate wherever required by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. That means if someone is going to provide the construction services, in that case that will be treated as services part, not as a supply of goods. Okay, but agar koi, suppose I am going to provide any construction services, I am going to construct any building. Okay, जब तक वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब तक ये ट्रीट होगा कि दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसके कंप्लीशन होने के बाद जब उसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आ जाए या फिर उसका कोई उसको आकर के ऑक्यूपाइड कर ले, उसके बाद में अगर मैं अपनी सर्विसेज का बिल देता हूं, in that case that will be treated as supply of goods, not as a supply of services. Sir, I am going to take the example and with that example I am going to explain the thing. Suppose there is a building और उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जो भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज माय सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सपोज मैं ही कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, लैंड भी मेरी है और उसका जब कंप्लीशन हो गया, मुझे इंजीनियर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया. आफ्टर गेटिंग दैट कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इफ आई एम गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग टू मिस्टर एक्स, in that case I cannot say that this is a supply of services. In that case I can say this is a supply of goods, because यहाँ पर क्या होगा, टाइटल का ट्रांसफर होगा और whenever there is a transfer of title, in that case the same should be treated as the supply of goods, not as a supply of services. Sir, you got my point? How you got the completion certificate? काउंसिल ऑफ द आर्किटेक्चर से आप ले सकते हो, चार्टर्ड इंजीनियर से ले सकते हो, जो लाइसेंस्ड सर्वेयर या फिर रिस्पेक्टिव लोकल अथॉरिटी है उनसे आप यहाँ पर ले सकते हो. दैट इज व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ दिस. नाउ
temporary transfer permitting to use the enjoyment of any intellectual property right. Suppose I have any trademark, patent, or copyright, and if I am going to use the right to use the trademark, copyright, or patent to someone else, in that case, I am just going to transfer the right to use that patent, trademark, or copyright, and that is called as your supply of services, not as a supply of goods. Treated as supply of services, not as a supply of goods. Development, design, programming, customization, adoption, upgradation, enhancement, implementation, information technology software, that is also called as your supply of services, not as a supply of goods. Suppose I need to install quick software in my particular laptop. In that case, अगर मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर वो क्विक सॉफ्टवेयर डलवाना है, that is called as supply of services, not as a supply of goods. Okay. Now, obligation to refrain from any act or tolerate an act or situation to do an act. Suppose I am a salary employee. Okay, I am an expert in बटुक कंसल्टेंसी नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड और इन्होंने मुझे बोला हुआ है कि अगर आपने एक साल से पहले इस बटुक कंसल्टेंसी से अपना एग्रीमेंट ब्रेकअप किया इन दैट केस यू नीड टू पे and notice period charges or you need to pay a charges called 1,50,000 2 lakh rupees, and if I am going to break that agreement and I am going to pay that 1 lakh rupees to the Batuk consultancy, in that case that will be supply for Batuk consultancy and Batuk consultancy need to pay the tax and that is to be treated as supply of services. So सर जब भी आप लोग जीएसटी ऑडिट करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू चेक द जीएसटी डिटेल्स as a, at the time of filing of GST and 9 or 9C or at the time of departmental audit, केवल फाइनेंशियल फिगर्स पर भी हमारा फोकस नहीं होना चाहिए. अगर फिगर्स खूब सारे हैं जो हमें देखने हैं, सपोज एम्प्लॉइज लास्ट ईयर 20 थे, इस टाइम 15 हो गए तो 5 एम्प्लॉइज छोड़ कर गए. इन दैट केस वी नीड टू चेक दैट किसी ने कोई नोटिस पे तो नहीं दिया है, or if someone is going to pay the notice pay in that particular case, we need to check that if notice pay पे GST उस फॉर्म में पे किया है या फिर नहीं किया है. और if you found that particular type of issue, you will get that in maximum cases they are not going to pay the GST on that notice pay. So these things are very much relevant for us and we need to take care of it. Okay. Now, transfer of the right to use any goods for any purposes for case for deferred payment and other valuable consideration. If someone going to provide the right to use any goods, in that case the same should be treated as supply of services. सर ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? एक बेसिक चीज तो ये है, whenever there is a transfer of title, in that case the same should be treated as supply of goods. Whenever there is a right to use that transfer, in that case the same should be treated as supply of services. Now, composite supply. The following composite supply shall be treated as supply of services. That means works contract service is a supply of services. Suppose Mr. X is given given contract for making the building, for constructing one building, including the material. In that case, this is a composite supply because I need to buy certain material, that is cement, iron, and all that, and also I need to provide the labor services. So in that case, I am going to provide the composite services. बट एज पर शेड्यूल 2 कहता है कि जब भी कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है इंक्लूडिंग मटेरियल, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. दैट इज व्हाट इज द thing which is mentioned in that schedule 2. Next, supply by way or part of any service or any other manner whatsoever of goods, being goods or any other article for human consumption or any drink, where such service supply or services in cash, deferred payment, valuable consideration, that means restaurant services. If someone is going to provide the restaurant services, संकल्प जो कि जोधपुर के अंदर है और बहुत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट है, this is not a part of advertisement. Okay, so in that case, if we are going to that Sankalp restaurant and they are providing a South Indian food, okay, so they are going to provide the services including that South Indian food. So in that case the same should be treated as composite supply because यहाँ पर goods भी है, that is वो South Indian products भी है and उसकी services भी है. But
As per Schedule 2 of CGST Act says that the same should be classified as supply of services, and we need to decide the time of supply accordingly. That is what is the things we need to be very much careful. So sir, Schedule 1 of CGST Act के अंदर हम लोगों ने समझा कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो कौन सी एक्टिविटीज है जहां पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। और शेड्यूल 2 बताता है कि द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस व्हिच इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बेसिकली हमने ये देखा जहां पर टाइटल का ट्रांसफर होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और जहां पर राइट टू यूज ट्रांसफर होगा वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें मल्टीपल एग्जांपल्स देखने होंगे और हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दिस इज द पर्टिकुलर केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर जस्ट कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स दैट शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 इज ओके फॉर यू। Sir, please comment in the chat box that Schedule 1, Schedule 2 of CGST Act is okay. Activities or transactions which shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services. That means all these transactions or activities which is mentioned in Schedule 3 of CGST Act that will be treated neither as a supply of goods nor as a supply of services. That means no question of GST, no GST shall be charged on these type of activities or transactions. Okay, so let's start our discussion one by one on the activities or transactions which is mentioned in Schedule 3. Activity number 1. Service by an employee to the employer in the course or in relation to the employment. Whenever any employee is going to provide the services to their employer and employer going to make the payment to that employee, in that case the same should be treated as not as a neither as a supply of goods nor as a supply of services. That means no GST. But if any employer is going to make any gift to employee more than 50,000 rupees, in that case GST should be charged on that particular gift which is more than 50,000 rupees. If the gift is up to 50,000 rupees, in that case there is no GST, the same is exempted. But we need to check that sir जो गिफ्ट उसने एम्प्लॉयर को दिया है उस गिफ्ट पे कहीं उसने इनपुट तो क्लेम नहीं की है। Whenever we are going to check the financial statement or GSTR to be written or input tax credit ledger, that is purchase register, or if we found that on the occasion of Deepavali various industries are going to provide the gift Deepavali gift, in that case we need to check जो गिफ्ट उसने अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया है वो गिफ्ट उसने कहीं ना कहीं से बाय किया होगा। वी नीड टू चेक कहीं उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो क्लेम नहीं कर लिया, बिकॉज द सेम इज नॉट अलाउडेड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी। और शेड्यूल 3 को भी जोड़ दो। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अवर टुडे सेशन मैंने एक बात बोली थी, जहां पर मैं आउटपुट पे कर रहा हूं वहां मैं इनपुट क्लेम कर सकता हूं, जहां मैं आउटपुट पे नहीं कर रहा हूं ऑन दैट पर्टिकुलर सप्लाई आई एम नॉट eligible to claim the input tax credit. Now, there is a contract of service between employer and employee. Here, under contract of service, master can order regarding work, but in case of contract for service, there is no order from the master. That is what is the difference between contract of service and contract for service. Okay. In Batuk Consultancy, I am working as a contract for service. I am not for contract of service. Okay. They cannot order me. So I am going to provide my professional services, and when I am going to provide my professional services, at that time GST should be charged,
एंड व्हेन आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड इन द कैपेसिटी ऑफ अ प्रोफेशनल सर्विसेज, सपोज अगर मैंने कोई एम्प्लॉयमेंट ले रखा होता है कंसल्टेंसी के अंदर, तो उस केस में आई एम वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और उस समय जो वो कहते हैं वो मुझे करना पड़ता, और दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप. So whenever we are going to check these things, we need to clearly bifurcate the contract of service and contract for service. Okay, services by any court, any tribunal established under any law for the time being in force, that is also neither supply of goods nor supply of services. Any function performed by the member of parliament, member of state legislatures, member of panchayat, member of municipality, duties performed by any person जो कि constitution में कोई ना कोई post held करता है, there is no GST on that. That's the same should not be treated as your tax. सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नो जीएसटी. अगर कोई भी बंदा, आप तो बस इतनी सी बात को ध्यान रख लो, अगर कोई भी बंदा कोई गवर्नमेंट पोस्ट हेल्ड करता है, और इन दैट केस इफ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज, in that case there is no GST because the same is neither supply of goods nor supply of services or services by funeral, दाह संस्कार और उससे रिलेटेड लाने ले जाने के लिए जो व्हीकल्स होते हैं, उसके जो भी एक्सपेंडिचर या फिर उसकी जो भी सर्विस है, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर कवर होती है. हेंस नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी ऑन फर्नल और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर. Sale of land, in case of sale of land there is no GST because the same is neither supply of goods nor supply of services. But in case of sale of building, okay, if there is a sale of building, in that case whatever will be the amount of one third should be treated as a value of land, and on that one third part there is no GST. बैलेंस थ्री फोर्थ पार्ट के ऊपर यहाँ पर, टू थर्ड पार्ट के ऊपर यहाँ पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा, वन थर्ड पार्ट के ऊपर यहाँ पर जीएसटी चार्ज होने वाला नहीं है. Okay, so in case of specific only land hai, there is no question of GST. But if there is a building, in that case we need to separate the land part. So deemed hai ki one third part of that particular price will be the part of land. और अगर यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मेथड स्पेसिफाई कर रखा है, उसके तरीके से अपने को लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दैट केस वी नीड टू गो विद दैट पर्टिकुलर मेथड. और इफ देयर इज नो मेथड इज अवेलेबल, इन दैट केस वन थर्ड ऑफ द वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज द वैल्यू ऑफ लैंड. नाउ long lease of land is practically sale of land. Suppose if someone is going to provide that land on 99 years of lease, in that case this should be treated as sale of land itself. In that case the same should be treated as supply of goods. Sale of plots after developments, in the case of development charges are added in the cost of plots, hence composite supply where principal supply is sale of land, hence not taxable. ओके, सपोज आई हैव अ लैंड, कोई मेरे पास आया के साथ उसको मुझे दे दो, बस जस्ट यू नीड टू डेवलप दैट पर्टिकुलर लैंड. मैंने उस लैंड को डेवलप करवा दिया, डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए, और इफ आई एम गोइंग टू मेक द सप्लाई ऑफ दैट लैंड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, इन दैट केस आई एम गोइंग टू सप्लाई द लैंड एज वेल एज द डेवलपमेंट, बिकॉज मैंने डेवलपमेंट चार्जेस भी तो बियर किए. बट यहाँ पर ये डिसीजन आया कि आपकी प्रिंसिपल सप्लाई इन दैट स्पेसिफिक केस, the principal supply is the land, and hence in that case there is no GST because the same is not treated as neither as a supply of goods nor as a supply of services. Now actionable claims other than lottery, betting and gambling, these are also neither supply of goods nor supply of services. Supply of goods from a place in the non-taxable territory, that means high sea sales. If someone is in India and if he is going to sell any product from America to Japan, in that case there is no question of GST because America is also non-taxable territory and Japan is also non-taxable territory. And if Indian person is going to make that particular sale from America to Japan, in that case there is no GST. Sir, concept of high sea sale is okay for you? Supply of warehouse goods to any person before clearance for home consumption. सपोज कोई गुड्स यहाँ पर होम वेयरहाउस गुड्स के अंदर पड़ा है कस्टम स्टेशन पे, और अगर वो कस्टम स्टेशन पर ही मूव कर रहा है, इफ एनी गुड्स इज मूविंग इन बिटवीन द कस्टम स्टेशन ओनली, the goods is not moving for the home consumption, in that case the same should be treated as neither supply of goods nor supply of services.
जब तक वो होम कंजम्पशन के लिए आउट नहीं होगा डोमेस्टिक मार्केट में, तब तक उसे सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर ही वो वहां पर घूम रहा है, कस्टम एरिया में ही वो रन कर रहा है, वो कस्टम एरिया से डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आउट नहीं। नेक्स्ट, supply of goods by a consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India, but before clearance for home consumption. The same is there. If the goods is in the custom area, in that case, the same should not be treated as neither supply of goods nor supply of services. ओके सर, सो एज पर शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, हमने ये देखा कि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अगर गवर्नमेंट में कोई पोस्ट हेल्ड करता है और वो बंदा अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, दैट विल बी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फ्यूनरल और उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो सारी की सारी नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लैंड नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लैंड के साथ में डेवलपमेंट चार्जेस वाला कंपोजिट सप्लाई वाला एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। बिल्डिंग की, इफ देयर इज अ सेल ऑफ बिल्डिंग, इन दैट केस वी नीड टू बाइफरकेट द फिगर ऑफ लैंड एंड बाइफरकेट द फिगर ऑफ बिल्डिंग बाय 1/3 विल बी द लैंड एंड बैलेंस 2/3 विल बी द building. Then after we had discussed about that high CCS, that is one person is outside India, another person is also outside India, and someone who is in India, if he is making the arrangement of sale and purchase, in that case the same should not be treated as neither supply of goods nor supply of services. Sir, is that okay? So हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस द सेक्शन 7। हम लोगों ने आज के सेशन में सेक्शन 7 को कंप्लीट किया है। अप्रोक्स हमको 1 आवर लगा है, वी हैड टेकन 1 आवर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सेक्शन, बट दिस सेक्शन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपको ये पता चलेगा कि दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अ सप्लाई, in that case you can decide what will be the type of supply, value of supply, rate of tax, what is the place of supply, what about the input tax credit, all these things we need to decide according to that point. Directly we cannot decide. Now sir, what do you mean by that composite supply or mixed supply? So, section 8 of CGST Act talks about the composite and mixed supply. I suppose section 7 is okay for you. Okay, sir. If you have any issue regarding that section 7 of CGST Act and the schedule 1, schedule 2 and schedule 3. Schedule 1 talks about the consideration part. Schedule 2, supply of goods or supply of services. Schedule 3 talks about neither supply of goods nor supply of services. In तीन schedule में और section 7 में अगर आपको कोई भी issue हो, you can comment in the chat box or you can comment in the WhatsApp group. Now I am going to take the composite supply and mixed supply section 8 of CGST Act. Tax liability on composite supply and mixed supply. The tax liability on a composite or mixed supply shall be determined in the following manner, namely, a composite supply comprising two or more supply, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. So in case of composite supply, there will be a two supply. One will be the principal supply and another will be the associate or ancillary supply. Okay, in that case the rate will be charged as per the rate of principal supply. Then a mixed supply comprising two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax. So in case of composite supply, GST will be charged as per the GST rate of principal supply. In case of mixed supply, GST rate will be charged as per the highest rate. Suppose there is a two product and दोनों को mix करके अगर हम लोग बेच रहे हैं, in that case the GST rate will be the highest rate. Whatever will be the highest rate, that will be charged in case of mixed supply. तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने केवल रेट पे डिस्कस किया कि इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई प्रिंसिपल पे जो भी रेट है वो लगेगी, इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई जो हाईएस्ट रेट है वो लगेगी। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कंपोजिट सप्लाई एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट मिक्स सप्लाई? सो composite supply, two or more supply, both are naturally bundled. Sir, naturally bundled required है। मोबाइल एंड चार्जर, these both are naturally bundled. बिना चार्जर के मोबाइल किसी काम का नहीं है।
और बिना मोबाइल के चार्जर किसी काम का नहीं. So we can say these are the naturally bundled, supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is a principal supply. So in case of mobile or charger, mobile will be your principal supply. So GST will be charged on that complete headset, that is mobile including that charger. The rate of mobile will be charged on that particular charger also. So principal supply, it is in a predominant part of composite supply. Ancillary for supply, that is your mobile. Mixed supply, all the supply which is not a composite supply, that will be treated as your mixed supply. Now there are certain examples are available. Bus body building. In this work, supply of parts of bus body and fitting thereof shall be included. Here principal supply is body parts and fitting is ancillary part of composite supply. So in that case your bus body parts, so in that case जो body parts है वो आपके प्रिंसिपल सप्लाई हो गया और उसकी फिटिंग करना जो है वो ancillary सप्लाई हो गया. So we can say that these type of supply should be considered as your composite supply. Is that okay, sir? Now इन केस ऑफ एयर कंडीशनर्स, जो भी एसी सेल करता है वो उसके साथ में उसका इंस्टॉलेशन करवाता है. इन दैट केस द एसी विल बी योर प्रिंसिपल सप्लाई एंड द इंस्टॉलेशन विल बी योर ancillary supply. So we can say that the sale of AC will be treated as your composite supply. Now, what is the difference between composite supply and mixed supply? In case of composite supply, both are naturally bundled, but in case of mixed supply, they are not naturally bundled. उनको बनाया गया है. Suppose मेरे एक कोर्स के साथ में दूसरा फ्री. Okay, one course is related to complete GST law. Another course is 201 important judgments under GST. इन दो कोर्स को मैंने नेचुरली बंडल नहीं किया है, इनको केवल मिक्स किया है. ये साथ में नेचुरली बंडल नहीं है. बट with this complete GST law, जो book है simplified GST guide, we can say these both are the naturally bundled and conjunction with each other. So that is what is the example of naturally bundled and not naturally bundled. सेपरेट प्राइस में बी चार्ज. इन दैट केस हमने देखा है कोर्स की अलग फीस है और बुक की अलग फीस है. ओके, सो सेपरेट प्राइस में बी चार्ज. इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई वो सिंगल प्राइस ही चार्ज हो रही है. दैट मींस इस कंप्लीट जीएसटी लॉ के कोर्स के साथ में आपको 201 important judgments का कोर्स फ्री. दैट मींस वन सिंगल प्राइस इज चार्ज, नो सेपरेट प्राइस इज देयर. सर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? विद दैट एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है सो दैट इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू. Now, sir, meaning of naturally bundled, how we can decide that particular supply is naturally bundled or particular supply is not naturally bundled, वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? So, perception of consumer, कंज्यूमर क्या सोचता है? हम क्या सोचते हैं कि मोबाइल और चार्जर इज कंज्यूम्ड विद ईच अदर. ओके, एसी और उसका इंस्टॉलेशन कंज्यूम्ड विद ईच अदर. सो परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर, नेचर से भी हमको पता चल जाएगा एंड मेजोरिटी ऑफ द मार्केट उसमें क्या कर रहे हैं, दैट विल डिसाइड. अब आप बोलोगे सर एप्पल तो है ना चार्जर साथ में नहीं देता है, व्हाई यू आर सेइंग दैट दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई? सर मेजोरिटी ऑफ द मार्केट, 90% of the market capture charger साथ में प्रोवाइड करवा रहा है. सो वी कैन से दैट मोबाइल एंड चार्जर इज योर कंपोजिट सप्लाई. सर समझ आ रही है कि आपको चीजें कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई? नाउ certain examples are there. Supply of goods with transportation is to be treated as your definition of कंपोजिट सप्लाई. मैंने कोई फ्रिज बाय किया और फ्रिज के साथ में उसने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन हम आपके घर तक पहुंचाएंगे. ओके, इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज द कंपोजिट सप्लाई. Supply of desktop computer with CPU, monitor, keyboard, mouse is a single supply that will be treated as your composite supply. Next, Mr. Palas has taken a house on rent. With rent, he is required to pay the amount of electricity and water charges. Then this is treated as composite supply. बिकॉज खाली घर उसने रेंट पे ले लिया, अगर वहां पर लाइट पानी नहीं है तो क्या रहना पॉसिबल है? नो. सो दिस इज द कंपोजिट सप्लाई हाउस विथ रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, Mr. Mrdul has purchased a medical equipment. Along with the equipment, he had also received a medical instrument for buying the particular quantity of the product. In that case, the same should be treated as the composite supply. After sales services is also a composite supply. Is that okay, sir?
कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई में नेचुरली बंडल्ड होगी, प्राइस डिफरेंट हो सकती है। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई सिंगल सप्लाई होगी, मिक्स कर रखा है उसको, प्राइस यहाँ पर सिंगल होगी, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, मैंने सैम्पो के साथ में शॉप को मिक्स कर दिया। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द मिक्स सप्लाई। सो वी नीड टू डिसाइड फॉर रेट पर्पजेस, क्योंकि मिक्स सप्लाई के अंदर हाईएस्ट रेट लगेगी, कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई की रेट है वो लगने वाली है। सो वी नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, कहीं कोई सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है अगर उसको मिक्स सप्लाई कंसिडर कर दिया तो भी इश्यू हो सकता है, कहीं कोई सप्लाई मिक्स सप्लाई उसको अगर कंपोजिट सप्लाई कर दिया, इन दैट केस देयर इज आल्सो इश्यू। कई बार हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू फाइल द जीएसटी रिटर्न और व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द थिंग, हम लोग केवल यही देखते हैं कि कोई 3B और 1 में डिफरेंस है या फिर नहीं है, 2B और 3B में डिफरेंस है या फिर नहीं है। हमारा माइंडसेट वहां तक रुक करके रह गया है कि 2B और 3B का डिफरेंस हमको चेक करना। और रेवेन्यू लीकेज निकालने के लिए, किसी पॉइंट को करेक्ट करने के लिए, कंप्लायंस को करेक्ट करने के लिए हमारे पास में दूसरे कई सारे तरीके हैं, दूसरे कई सारे पॉइंट्स है, दूसरे कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑन विच वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू टॉक। 2B और 3D का डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगर वहां पर कोई 5,000 का डिफरेंस है तो। दीज आर द बेसिक पॉइंट कि उसने सप्लाई को सही कंसीडर किया है या फिर नहीं किया है। कहीं वो उसके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी 28% लगनी चाहिए थी, उसने कि 18% की तो नहीं लगी है, या फिर 12 तो नहीं लगी, या फिर 2 रेट लगनी चाहिए, वो सिंगल रेट तो नहीं लगा है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन विच वी नीड टू टॉक। कहीं जो प्लेस ऑफ टाइम, प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड हुआ है वो सही है या फिर नहीं है, कहीं जो टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हुआ है वो सही है या फिर नहीं है। इसलिए these points are really very important and we need to talk on that, we need to think on that, we need to discuss on that. As a chartered accountant, as a departmental authority, as a professional, this is our liability. Now, certain miscellaneous issues are there. Sale, purchase, transfer of secured debt is a good as transfer of money is as good as transfer of money, hence not subject to GST. That means अगर कोई secured debt है, अगर कोई खरीदता है, बेचता है, unsecured loan लेता है, secured loan लेता है, that is treated as money and there is no GST on account of money. So the same, there is no GST. But if there is any service charges, in that case, GST should be charged on those service charges. Beneficial interest in movable property which is not in possession is defined as actionable claim, hence subject to GST. Securities are neither supply of goods nor supply of services, here not liable for GST. But if there is any transaction charges, in that case GST should be levied. Dividend income and also profit on sale of share are not subject to GST because this income is due to transaction in the security, hence there is no GST. So, sir, we can say if there is any transaction in between the securities or if there is any transaction of secured debt, in that case there is no GST. So, sir, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या रीड आउट किया आज के सेशन में। जब हमने शुरुआत की थी एट द टाइम वी हैड स्टार्टेड आवर डिस्कशन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड ऑफ जीएसटी, दैट इज आर्टिकल 246 ए। हम लोगों ने बोला कि आर्टिकल 246 ए गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंसर्ट किया था, किसके लिए? जीएसटी के लिए, जहां पर देयर इज अ कॉन्करेंट पावर इन हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड इन हैंड ऑफ पार्लियामेंट टू मेक द लॉस। ओके, in case of interstate supply only parliament has the power to make the laws. सर वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपको याद है क्या? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जीएसटी विल बी चार्ज ऑन अ फ्यूचर डेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, मेजोरिटी 75% की मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? डिस्प्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू को। ओके, और डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल विल डिसाइड दैट व्हेन वी नीड टू enter these 5 petroleum product into the regime of GST. Okay, then after we had started our discussion on a very important the basics of GST, that is supply, when the particular transaction or activity is to be treated as your supply as per section 7 of CGST Act, we need to decide, and for that purposes हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि उसको सप्लाई को डिसाइड करने के लिए यहां पर हमको सेक्शन 7 का रेफरेंस लेना पड़ेगा। सेक्शन 7 सप्लाई इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, रेंटल इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर अ कंसीडरेशन। लेकिन शेड्यूल 1 बोलता है कि अगर कंसीडरेशन नहीं भी होगा और अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो भी हम लोग उसको क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे। और वहां पर हमने बोला था कि अगर कोई बिजनेस ट्रांसफर करता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस करता है या फिर डिस्पोजल ऑफ असेट्स करता है, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई। अगर यहाँ पर कोई रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, दैट इज सेम पैन नंबर डिफरेंट जीएसटीएन, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज योर सप्लाई। इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इन आल्सो the same should be treated as
सप्लाई। अगर यहाँ पर कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होता है तो भी उसे सप्लाई की डेफिनेशन में मान लिया जाएगा विदाउट कंसिडरेशन। देन आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया शेड्यूल 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, दैट इज द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन इज टू बी ट्रीटेड एज वेल ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जब हमने देखा कि अगर कोई टाइटल ट्रांसफर होता है इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड इफ देयर इज अ transfer of right to use that particular land, building or any other assets, plant and machinery, the same should be treated as the supply of services. हम लोगों ने डिस्कस किया कंपोजिट सप्लाई के बारे में, जहां पर होगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ सप्लाई ऑफ composite supply, but the same should be treated as the supply of services. In case of restaurant services, the supply is also treated as composite supply, but शेड्यूल 2 बोलता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। देन आफ्टर हम लोगों ने बात की शेड्यूल 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया फ्यूनरल और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, पंचायत समिति, म्युनिसिपैलिटी, पार्लियामेंट और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कोई पोस्ट होल्ड करता है, वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर हाई सी सेल्स, कस्टम एरिया के अंदर कोई मूवमेंट हो रहा है, डोमेस्टिक के लिए कंजम्पशन के लिए आउट नहीं हुआ है, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। देन आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई के अंदर जहां पर नेचुरली बंडल्ड होगी, प्राइस डिफरेंट हो सकती है, उस केस में प्रिंसिपल सप्लाई की जो रेट है वो रेट ऑफ जीएसटी चार्ज होने वाली है। और इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, उनको बनाया गया है एंड सिंगल प्राइस के लिए वो दे रहे हैं। एग्जांपल हमने दिया था कंप्लीट जीएसटी लाइव कोर्स विद 201 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, अगर हम लोग फ्री उसके साथ में दे रहे हैं, इन दैट केस द सेम शुड बी ट्रीटेड एज द मिक्स सप्लाई एंड जीएसटी शैल बी चार्ज्ड अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट रेट। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ कोई सिक्योरिटीज होती है, इन दैट केस देयर इज नो जीएसटी। अगर कोई सिक्योर डेट या फिर अनसिक्योर डेट अपने ट्रांसफर कर रहा है, इन दैट केस देयर इज आल्सो नो जीएसटी, बट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर चार्जेस और सर्विस चार्जेस जीएसटी शुड बी लेवाइड। ओके सर, सो आज के सेशन में हम लोगों ने ये सब कुछ डिस्कस किया, सेक्शन 7, सेक्शन 8 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। अगर आपके पास में कोई भी डाउट हो, you are free to raise your doubt in the chat box and you can put your doubt in the WhatsApp group also आज हम लोग ये कवर कर रहे हैं, कल के सेशन में हम लोग आरसीएम से जो प्रोविजंस है उससे रिलेटेड हमको बात करने वाली है, एंड आल्सो वी आर गोइंग टू टेक द कांसेप्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, सेक्शन 12 13 and 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके सर, सो द सेशन विल बी मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोर इंटरेस्टिंग सेशन। I just humble request to you, just connect with me for our tomorrow session sharp at 8 p.m. Okay, sir. So if you have any doubt, WhatsApp group is there. You can put in the WhatsApp group. One more request to you. This is our first session for the 5 days live course. So this is my request to you. Whatever will be your suggestion, whatever will be your feedback, whatever will be the comments for the today's session, I just request you, please put your comment and your suggestions and your feedbacks in that particular WhatsApp group, because that will be the biggest achievement or bigger award or reward for me, whatever you can say. Okay, sir. So I am going to sign off for our today's session. We are going to meet tomorrow sharp at 8 p.m. Okay, sir. Thank you. Stay connected for more updates and good night. मिलते हैं कल के सेशन में।